अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या जरूरत है। मैं आप लोगों को बताया है कि फूरियर और लैप्लास आर द सेम, दे आर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. So one of the Dirichlet conditions for the existence of Fourier transform is that the signal should be absolutely integrable. That is x of t into dt. Okay, that is your minus infinity to infinity. So this should be less than infinity. इसको बोलते हैं कि the signal is absolutely integrable. अगर signal, if you take for example x of t is equal to e raised to minus 2t, okay, into u of t. Okay, this signal अगर देखेंगे this is t and this is x of t, so this signal is exponential and the decaying signal and it is absolutely integrable. मतलब उसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होता, तो इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. If you take another signal, for example x of t is equal to e raised to 2t u of t, this is a growing signal. अगर सिग्नल आप टाइम डोमेन में प्लॉट करते हैं, सो दिस इज t, दिस इज x of t, द सिग्नल विल लुक लाइक दिस. उस सिग्नल का वैल्यू आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम इन्फिनिटी. सो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म इज द सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. तो इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं और इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर आपको इस काइंड ऑफ सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है या आपको कन्वर्ट करना है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जाना है. सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस. सो व्हाई देयर इज नीड फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द लार्ज क्लास ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सिग्नल दैट आर नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. हमने देखा है, तो इसलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म द सिग्नल विच आर नॉट इंटीग्रेबल, the Laplace transform is applicable. So Fourier transform based problems cannot be employed in the class of problems. तो स्पेशल हम Laplace transform यूज करते हैं. दूसरा कंडीशन है Laplace transform the integral differential equation, because mostly the equation in the time domain are the integral differential equation. मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों भी होते हैं. अगर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इट इज अ टेडियस टास्क. अगर आप Laplace transform यूटिलाइज करते हैं, so integral differential equations are converted to simple algebraic equation. This is one of the biggest benefit. So कोई भी अगर आपका सिस्टम है which consist of the RLC in the your electronics, resistor, capacitor or the inductor, that is called as a RLC. So if you apply the KVL or the KCL, so the equation will be integral differential equation and it is very difficult to solve. So same if you apply the Laplace, the equation will be converted to the simple algebraic equation and it is very easy to solve the algebraic equation. दूसरा benefit है, the Fourier transform is evaluated completely in the j omega axis. So it is difficult to find out or analyze the system in the j omega. अगर system stable है, unstable है, causal है, non causal है, तो it is very difficult. अगर आप Laplace transform find out करेंगे, तो हम वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी कैन प्लॉट इन द एस प्लेन. अगर एस प्लेन में अगर प्लॉट करेंगे, सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड पोल, जस्ट बाय लुकिंग द सिग्नल इन द एस डोमेन, यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट द सिग्नल इज सिस्टम इज अ स्टेबल और द अनस्टेबल, causal or the non-causal. So you can find out it very easily. The next benefit is the exponential factor has the effect of forcing the signal to converge. Hence Laplace transform can be applied broader class of the signal, that is e raised to minus st. So where s is equal to the sigma plus the j omega. तो यहाँ पे additional sigma use कर रहे. So this sigma is forcing the signal to become the converge. So these are four benefit of the Laplace transform or the need of the Laplace transform. Once again I will just summarize. So Laplace transform can be used for the signal for which the Fourier transform cannot be calculated, or the signal which are not integrable. For them also the Laplace transform can be computed. The second biggest benefit is that the integral differential equations can be converted to the simple algebraic equation which are very easy to solve. The Laplace transform system can be analyzed in the S domain very easily, that is in the S plane, just by depending on the poles and the zeros you can analyze it very easily and perfectly. And third factor, जो भी exponential signal है which are not integrable, they are forced to become the integrable
with the factor of the sigma in the S domain. So ये 4 limitations Fourier transform के, and that limitations can be overcome using the Laplace transform. So the Laplace transform come. Both are one and the same, but only that sigma factor is a different, and the j omega is converted to the S by adding the sigma to that Fourier transform equation.